नमस्ते सत श्रीकाल केम छो वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइट जनरेटर पावर अप योर डेटा इनसाइट्स। आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो मैं वापस आ चुका हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ जहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा जो हमारा आज का एजेंडा है। मेनली ग्रुप बाई फंक्शंस, ट्रांसपोज, रिवर्स रोज, काउंट रोज, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, राइट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको हाउ टू मर्ज टू क्वेरीज, हाउ टू अपेंड टू क्वेरीज एंड हाउ टू सॉर्ट द डेटा, मैंने ये एक्सप्लेन किया होता है, जिनके लिंक्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। यू कैन रेफर फ्रॉम देयर। सो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, बट उसके पहले प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट इफ आई मेक एनी वीडियोस ऑन दिस वन, you guys are not going to miss any updates. So let's just get started. So सबसे पहले हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस की ये सारे पार्ट है, तो सबसे पहले हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस में जाना होगा। तो आपको पता है पावर बी डेस्कटॉप पे एक ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन होता है। आप जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हो, इट विल टेक यू डायरेक्टली टू द पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर क्या है, कैसे वर्क करता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखा है, इंट्रोडक्शन टू द पावर क्वेरी एडिटर। एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन होता है जहाँ पे हम डेटा की क्लीनिंग करते हैं, डेटा की शेपिंग करते हैं, राइट। एंड बेसिकली कुछ एडिशनल कॉलम्स भी आप क्रिएट करते हो। सो जैसे भी डेटा को आप मोल्ड करना चाहो, आप डेटा को मोल्ड कर सकते हो इस पावर क्वेरी एडिटर में। चलो स्टार्ट करते हैं। जब आप ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर जाते हो तो आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस फीचर्स अवेलेबल हैं, लाइक ग्रुप बाय फंक्शंस, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, ट्रांसपोज, रिवर्स रो, काउंट रोज। ये सारे फंक्शन आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन चल के देखते हैं कि ग्रुप बाय फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ग्रुप बाय फंक्शन से पहले मैं आपको एक कॉमन कंपैरिजन करके दिखाता हूँ। आपने एक्सेल सीट यूज़ किया होगा, एक्सेल सीट में आप लोगों ने पिवट टेबल यूज़ किया होगा। व्हाई डू यू यूज़ पिवट टेबल? Pivot table is mainly used to summarize a large data set into few columns or few rows, right? So basically आप large data set को summarize करने के लिए based on some few or more aggregate functions आप वहाँ apply करते हो, right? So group by भी exactly वही काम करता है, but उनके करने के तरीके अलग होते हैं। pivot table होता है excel में, और वो same features यहाँ power bi में easily available है। तो चलो देखते हैं, करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास जो सेल्स का टेबल है, उस सेल्स के टेबल में हमारे पास ऑर्डर क्वांटिटी है, राइट। और हमारे पास एक कस्टमर्स का टेबल है, हमने ये सारे डेटा पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, राइट। और हमारे कस्टमर्स टेबल में जेंडर है और ये बहुत सारी डिटेल है, कस्टमर्स की ईमेल आईडी है, एनुअल इनकम है, एंड टोटल चिल्ड्रन, एजुकेशन लेवल एंड ऑक्यूपेशंस है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें जेंडर वाइज टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सोल्ड शो करना है, या फिर जेंडर वाइज एंड एजुकेशन लेवल वाइज हमें टोटल ऑर्डर क्वांटिटी सोल्ड हमें दिखाना है, एक समराइज करके बताना है कि टोटल मेल ने कितने ऑर्डर क्वांटिटी सेल करवाया, फीमेल ने कितना करवाया। तो गाइज आप देखोगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन कस्टमर के टेबल में है और कुछ ऑर्डर जो क्वांटिटी है, कुछ इन्फॉर्मेशन सेल्स के टेबल में है। तो मुझे बेसिकली कस्टमर्स के कुछ इन्फॉर्मेशन को इस सेल्स के टेबल में लेकर आना होगा। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे अंडर द होम टैब आप देखोगे तो मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू द मर्ज क्वेरीज हियर, राइट। मैंने मर्ज क्वेरीज अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखा दिया है। तो सेल्स में मर्ज क्वेरी कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि जिस भी दो क्वेरीज को, यानी जिस भी दो टेबल को आप मर्ज करना चाहते हो, उन दोनों टेबल के बीच में एक कॉलम ऐसा होगा जो कि कॉमन होगा, राइट। तो अगर मैं देखूं तो कस्टमर की सेल्स वाले टेबल में है और मुझे मर्ज करना है कस्टमर टेबल के साथ, एंड यहाँ भी कस्टमर्स की हमारे कॉमन कॉलम है। सो आई हैव जस्ट मेड द राइट चॉइसेस, राइट। हमने कस्टमर की को चूज कर लिया है। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू हिट ओके। सो व्हाट विल हैपन नाउ, द इंटायर टेबल विल बी मर्ज्ड इनटू दिस सेल्स टेबल, बट I don't want the entire columns of that customers tables. I need only few columns which is desirable, right? So it completely depends on you and the business problem. What do you exactly need to merge, right? So मैं यहाँ use original columns name as a prefix को मैं deselect कर रहा हूँ, और मुझे यहाँ सारे columns नहीं चाहिए। मुझे चाहिए gender चाहिए, right? मुझे चाहिए education level चाहिए and full name चाहिए। मैं अभी फिलहाल ये तीन कॉलम्स को जो है मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। मैं जैसे ही मर्ज करूँगा आप देखोगे कस्टमर्स के तीन इन्फॉर्मेशंस, यानी जेंडर, एजुकेशन लेवल और फुल नेम हमारा सेल्स के टेबल के साथ मर्ज हो चुका है, राइट। बेसिकली एक मर्जिंग ऑपरेशंस है। अब हम ग्रुप बाय फंक्शंस शुरू करते हैं लाइव डिमॉन्स्ट्रेट दिखा के।
प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि मुझे जेंडर वाइज टोटल क्वांटिटी सोल्ड चाहिए, जेंडर वाइज एंड एजुकेशन लेवल वाइज चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मुझे ट्रांसफॉर्म टैब में जाना होगा और मैं जैसे ही ग्रुप बाई पे क्लिक करूंगा एक विंडो पॉपअप होता है, राइट। जैसे कि ये एजुकेशन का लेवल है, मुझे जेंडर वाइज चाहिए, सो मैंने जेंडर को चूज किया क्योंकि मुझे जेंडर वाइज ग्रुपिंग करनी है, राइट। अगर इफ यू वांट टू ग्रुप बाय education level, you can group by education level. If you want to group by some other column, you can group by some other columns. But here the problem statement is we have to group it by gender and the education level. So I show you that. So I have just chosen the gender. What would be the name of the new column that you are just going to do that? You are going to summarize it. So total order quantity, right. And what operations that you are going to perform, basically you're just going to sum all the order quantity. And which one you are just going to do that, like order quantity, you are going to apply some aggregate function. See, so group by the aggregate functions are mainly applied like sum, average, median, mean, max, count rows, count distinct rows, all rows. So here I am performing the sum aggregate functions on the order quantity. So what will it do? It will basically summarize the total order quantity, right? When I will just hit OK, so the entire data set will be converted into two columns. One is gender, male and female, and there is a third options NA. I think its gender is not identified. That's why it is showing like NA, right? And the total order quantity, if you'll see under the male, it is once again under the male it is almost around 42,357, and under the female category is 41,228, and 589 order quantity has been sold for which gender has not been identified. So I have just applied the group by functions based on the one column. You have some advanced options based on which you can apply the group by function on more than one column. So I'm just again going back onto the group by functions. So I don't have to go again the group by. If I will click here, the steps has been recorded. If I will double click on this step, so again it is going to pop up, right. So when I will click on the advanced options, it will give you what are the second column based on which you want to group the data, right. So first one is gender, that you have already applied the group by. Second option is that I also want to group this data by the education's label, and the aggregate functions will remain same, that is the order quantity. Now when I will hit OK, the entire data set will be converted into the into the three columns. One is the gender, another one is education's level, and third one is total order quantity. So if you will see that, let's just wait and watch. It is applying. Yeah, here is the summarized table. So gender, here is the education's level, and here is the total order quantity. So male high school, male bachelor's, male graduate degree. So for each and every education's level, there is a male and female, and against which this total order quantity you have done. When you will just close and apply, so the entire sales table is not going to be loaded into your Power BI desktop. Only this summarized table is going to be loaded in your Power BI desktop. But I have just shown you just for an examples how to perform the group by functions. So I'm just deleting this step because I don't want this to do it, right. Okay, so the next option is like use first row as a hazard, transpose rows, reverse rows, and count rows. So for this one I need to import a few tables. I'm just going to do that, right. So I have to go to here. Okay, so I have categories table, product categories table. So I'm just going to extract this data, and I just want to load it in Power Query editor. Okay, so I'm just going to do that. Okay, now the product category table is extracted here on the Power Query editor. So guys, if you will have a look, you will say the table is not well formatted and it is not in the way it has to be, right. आप देखोगे कि हमारा ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर करके है, एंड ये वन टू थ्री फोर है, और ये बाइक्स, कंपोनेंट्स, क्लॉथिंग एंड एसेसरीज है, एक्सेसरीज। मुझे इसे बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है, ट्रांसपोज करना है। क्या होता है ये ट्रांसपोज? जब हम
कॉलम्स को रो वाइज एंड रोज को कॉलम वाइज शिफ्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज। सो अभी मैं ट्रांसफॉर्म टैब में जाऊंगा और मैं जैसे ही ट्रांसपोज पे क्लिक करूंगा आप देखोगे कि जो हमारा रो वाइज था वो कॉलम वाइज शिफ्ट हो गया और जो हमारा कॉलम वाइज था वो रो वाइज शिफ्ट हो गया है। एंड इसके अलावा अभी भी हमारे ये जो कॉलम वन एंड कॉलम टू है इसका कोई नाम नहीं है, आप दे सकते हो लाइक कैटेगरी की, you can rename it category key, and this is the category name, right? Category name, you can give it a name. So you have understood, and you can also choose the right data type. The data type for this one is whole number, so I'm just going to convert it into the whole number, and this category name is for sure it's a text values, like you can choose it as a, once again, as a text. So now it has converted the data type into the text, right? So I think group by you are clear about, and transpose you are clear about. So what is the reverse row, count rows, and use first row as a header? I will explain. So for that I really need to load one more data, that is a territory table, right? Here is the territory table. So I'm just going to extract this data. Okay, so guys, one thing I would say, I think Power BI is very smart enough. ये सब चीज़ों को खुद ही खुद डिटेक्ट कर लेता है मेनली। आप देखोगे तो पहले ये ना जो हेडर्स आप देख रहे हो सेल्स टेरिटरी की, रीजन्स, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट, ये पावर बीआई ने खुद ही इसको एज अ हेडर्स प्रमोट कर दिया है। इनिशियली ये नहीं था, बट आई वांट टू डिमॉन्स्ट्रेट यू लाइव कि कैसे ये काम करता है, इसलिए मैं ये स्टेप्स को डिलीट कर रहा हूँ। आप देखोगे इनिशियली जो डेटा होगा ना, ये डेटा ऐसे होना चाहिए था एट द टाइम ऑफ लोडिंग दिस डेटा, बट पावर बीआई ने खुद ही कुछ स्टेप्स फॉलो कर लिए, लाइक इसके जो हेडर्स हैं उसको एज ए हेडर प्रमोट कर दिया जो फर्स्ट रो है, राइट। सो चलो देखते हैं क्या होता है ये फर्स्ट रो एज अ हेडर। कभी कभी आप जब डेटा को लोड करते हो तो आप देखते हो कि आपके जो रियल जो हेडर्स है ना टेबल के, वो आपके रो में शिफ्ट हो जाते हैं, लाइक सेल्स टेरिटरी की, रीजन्स का, कंट्री एंड कॉन्टिनेंट। लेकिन आपके जो एक्चुअल हेडर्स होना चाहिए वो हेडर्स नहीं होते हैं, और उनकी जगह कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर करके आता है। सो इन पावर बीआई देयर इज अ वेरी एडवांस एंड एलिगेंट फीचर्स, बाय यूजिंग दैट यू कैन प्रमोट दिस फर्स्ट रो एज योर हेडर ऑफ दैट टेबल, राइट। इस फर्स्ट रो में जो भी एस एल्स टेरिटरी की, रीजन एंड सो ऑन एंड कॉन्टिनेंट, इसको एज अ हेडर प्रमोट करना है आपको, राइट। सो देयर इज अ वेरी एडवांस एंड एलिगेंट फीचर्स व्हेन यू विल क्लिक द फर्स्ट रो एज अ हेडर, सी the first row has been promoted as a header for this table, or data type is also detected. Data type अगर देखते हो आप तो सेल्स टेरिटरी की it's a numerical whole number, so it's a whole number, data is whole number. It's a text, so it is a text. It is also a text, so the data type is text. So Power BI is basically smart enough, it will auto detect the data type and it will suggest to the table, right? सो हमने यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर भी देख लिया, ट्रांसपोज भी देख लिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें रिवर्स रोज करना है। ये क्या होता है रिवर्स रो? आप क्या करते हो, आपके पास ले से फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रोज है, राइट, 1 2 3 4, लाइक नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, एंड एट लास्ट ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड किंगडम। when you will perform this reverse row operations, what will happen, what changes that you are going to see, just have a look and see what is happening. So the entire table has reversed, actually the entire rows has reversed. Now the things that you were seeing earlier from top to bottom, now the same thing you are seeing here from bottom to the top. So not in the previous, before performing this reverse rows operations, the northwest was showing on the top and the United Kingdom was showing at the bottom. But now what happened, everything has just reversed, right? And now United Kingdom it's showing on the top, then Australia, then Germany, France, Canada, and the top one it's showing in the last one, and the bottom one, right? So that's what the reverse rows actually do. काउंट रोज क्या होता है, बट मैं इसको वापस से रिवर्स कर देता हूँ, मैं वापस से इसको रिवर्स कर देता हूँ। एंड सी गाइस, अगर आप स्टेप्स देखो तो सबसे पहले मैंने रिवर्स रोज किया, वापस से मैंने एक रिवर्स रो कर दिया, यानी डबल बार हमने इसको रिवर्स किया, राइट।
काउंट रोज क्या होता है? अगर आप लाइक कस्टमर टेबल में आप जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। कस्टमर्स टेबल के जो हमारे डेटा हैं, या फिर मैं आपको सेल्स के टेबल में ही दिखा देता हूँ। सेल्स के टेबल में हमारे पास बहुत सारे डेटा हैं, राइट? अभी लेकिन पावर बीआई में जो विजिबल होते हैं ना जितने रोज, वो बेसिकली 999 प्लस रोज ऐसे शो करता है, राइट? लेकिन इससे ज़्यादा हमारे पास नंबर ऑफ रोज होते हैं। आपको एक्चुअली में पता करना है कितने रोज हैं, टोटल रोज काउंट करके ये हमें डिस्प्ले कर दे। सो व्हेन यू विल चूज दिस काउंट रो, द इंटायर टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू a single scalar values, that is the count of the entire rows. So when you click on the count rows, it will give you 56,046. So 56,046 is the total number of rows, right? It has been converted, the entire table basically. So it is a single scalar values. But I'm just deleting this step. So the count rows is what that you have to use for. I think you guys are pretty much clear how to perform this group by functions and why it is used for, what is used first row as a headers, right? Transforms, reverse rows, count rows. So thank you so much guys for watching my videos and giving me a lot of support. आप ऐसे ही मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहो। मैं अपने वीडियो के कंटेंट को और अच्छा बनाऊंगा एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं जितना डीप डाइव जाके चीज़ों को समझा सकूं लेमन लैंग्वेज में बाय गिविंग अ बेस्ट एग्जांपल्स। सो इसके लिए मुझे आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। अगेन वी विल कैच अप सून इन द नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू सो मच।